Rahman Rahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope you all are well. Okay student, let's start our today's lesson. Lesson number 2. Today we will discuss the topic and its name is conductors and insulators. Okay, today we will discuss what is the name of the topic? Yes, conductors and insulators. Okay, so please open your book. This is your book Amazing Science, and the topic is given on the page number 76. Okay, the page number 76. Please write date on this topic. Day. What is the date today? Yes, today date is 27th January and the day is Thursday. Okay, so the topic is conductors and insulators. Okay, so first I will read from the book, then I will explain. Okay, materials that allow an electric charge to pass along them are called conductors. Okay, materials that allow an electric charge. An electric charge, you know very well about the meaning of electric charge, to pass along them are called conductors. Okay, now first I will explain this word conductor. What is the meaning of this word conductor? Okay, basically the meaning of conduct is transfer of something. Transfer of something is conduct. Okay, it may be heat, it may be electricity. Okay, material which transfer heat and materials which transfer electricity. Okay, but our unit is electricity, so here we will only discuss the conductors which conduct electricity. Okay, the conductors which conduct electricity through them, so those conductors are called electrical conductors. Okay, the conductors which conduct electricity through them, they are called electrical conductors. Okay, here two simple definitions are given. So I will read: materials that transfer electricity through them, and in other word we can say materials that allow, जो allow करती हैं electric current को flow करने में. ओके, जिन मटेरियल में से easily electric current पास हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है. ओके, so they are called electrical conductors. Okay, and their examples are कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, आयरन, मरकरी. और आपने नॉर्मली जो आप लोगों ने देखे हुए हैं, मोस्टली जो आपने देखे हैं, वो आपके पास जितने भी कंडक्टर्स हैं जो वायर्स में यूज़ हो रहे हैं, दे आर कॉपर. ओके, दे आर copper conductors. Copper wires, we mostly we use copper wires because they are good conductors, and silver is also good conductor. Silver is also good conductor, but why we don't use silver? Because silver is expensive than copper, that's why copper is cheaper, that's why we use. So these material, copper, silver, gold, aluminium, iron, mercury, they all are metals. They all are metals. So what we conclude, that metals they are good conductor of electricity. Okay, metals, they are good conductor of electricity. Okay, so in your book it is written, metals are good conductor of electricity. In conductors, some electrons are not very tightly held to their atoms. Okay, we know the structure of atom. In structure of atom, in the nucleus, proton and neutrons are present, and electrons, they are present outside the nucleus, and electrons, they are not tightly held in the case of metals. Okay, हर किसी के केस में नहीं है, हर चीज़ हमारे पास सिर्फ मेटल्स. वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर? बिकॉज जो उनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के साथ टाइटली हेल्ड नहीं हैं, उनको इजीली वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं फ्रॉम वन एटम टू अनदर. सो दैट्स वाई मेटल्स, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, सो if
here, for example, this is structure of any metal, okay. In case of copper, okay, in the center proton, this is nucleus, proton, neutrons are present, and outside this nucleus electrons are revolving, and in case of copper 29 electrons are present, okay, 29 electrons are present, and the last electron, which is, so here these electrons are arranged here, okay. So the last electron, it is freely move, it can easily move from one atom to another. So this electron, which is not tightly held to this nucleus, it is responsible for the conduction of electricity, okay. So this loosely held electron is responsible for the movement of electricity, okay. So that's why metals are called good conductor, because the last electrons, it is easily transferred from one atom to another, so easily pushed by any source, okay. So that's why metals, they are good conductors of electricity. Now the next is insulators, okay. The next one is insulators. So materials that do not allow an electric charge to pass along them are called insulator, okay. बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, कंडक्टर्स के ऑपोजिट है मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक चार्ज टू पास अलॉन्ग देम, दे आर कॉल्ड इंसुलेटर. आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जितनी भी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स हैं उनके अंदर कॉपर है, बट द आउटर कवरिंग इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक. व्हाई इट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक? बिकॉज प्लास्टिक इज बैड कंडक्टर, इट इज इंसुलेटर, उसमें से करंट पास नहीं हो सकता. तो जितनी भी हमारी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस हैं, कोई भी चीज़ आप देखें उसमें इनर हम लोग मेटल यूज़ कर रहे हैं, बट उसकी जो आउटर कवरिंग है इट इज़ मेड अप ऑफ इंसुलेटर्स, ठीक है. आप स्विचेस को देखें, स्विचेस के अंदर क्या है, मेटल्स हैं, ठीक है, लेकिन जो स्विच बने हुए हैं वो प्लास्टिक के बने हुए हैं कि जो करंट है वो हमारी तरफ ना आए. अगर वो भी आपके पास कंडक्टर्स के होते तो क्या होता कि आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगता. सो जितनी भी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस हैं, जो उनकी बॉडी है अंदर से मेटल है, लेकिन आउटसाइड उनकी बॉडी जितनी भी है वो इंसुलेटर मटेरियल से बनाते हैं कि हम सेफ रहें, ठीक है. हमें सेफ करने के लिए इंसुलेटर मटेरियल से बनाते हैं कि करंट ट्रांसफ़र ना हो. अब आप ये देखिए, ये जितनी भी वायर्स हैं दे आर मेड अप ऑफ कंडक्टर्स एंड द आउटर कवरिंग इज मेड अप ऑफ इंसुलेटर, ओके. सो एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर्स आर प्लास्टिक, रबर, वुड, PVC, polyvinyl chlorides are insulators, okay. Electric wires are made up of conductors and the handles and bodies of electrical appliances are made up of insulators, okay. कि जो आपके पास मेन है इट इज़ जो इनर पोर्शन है, जिस तरह आपने अपने मोबाइल का भी चार्जर का भी अगर देखें वायर को अगर आप उसकी एग्जामिन करें तो आउटर प्लास्टिक है और दरमियान में जो ब्राउन कलर की आपको इट इज़ कॉपर वायर, ओके. So materials which do not allow electric current to flow through them, they are called insulators, okay. Their example plastic, rubber, cotton, wood, they are insulators, okay. So hope you will understand this topic, okay. Take care. Allah Hafiz.